Hi guys, this is the most common question I get from students. सर पढ़ने को मन नहीं करता, क्या पढ़ाई करनी है? Basically, no one want to study. We have to study because I want to crack the exam. So there are two options. Either even if you're doing self study, every Monday morning I'm going to give you a weekly targets. Yeah, I don't call it a timetable. I got targets for CAT 23, CET 24. That includes for all the other exams as well in between. आपको बस ये weekly target follow करने, ठीक है? So if you can follow these topics, just complete all these topics on the weekly basis and we are sorted. Okay, Monday to Sunday, बीच में एक दिन off रहेगा. Fine. So let's make a timetable so that if we can follow that. So there are three kind of students who are giving the exam. One who are working, one who are in college, and one who are taking the gap year. Those who are working and in final year college, MBA preparation is not your full time. MBA preparation is not a full time job. Your full time job is to study for the college or for working. But if you can give me 2 to 3 hours every day, ज़्यादा नहीं मांग रहा, 2 to 3 hours every day, we can rock. Monday to Friday. एक दिन छुट्टी चाहिए. Every Wednesday I'm keeping off. I'm not going to study at all on Wednesday. Those who have taken the gap year, they can take a Sunday off. Working and college student cannot take a Sunday off because Sunday you have to study more. Ulta. Yeah, because if I want to crack the exam, I need to study more. So weekend I'm going to study. Weekday I'm going to chill. Wednesday is your new weekend. गैप वाला संडे ऑफ कर सकता है, दे कैन बी विद द फैमिली दिस एंड दैट, बिकॉज तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारे पास टाइम है ज़्यादा. दोज आर टेकन अ गैप ईयर, इफ यू कैन डू 6 hours एवरी डे, यू विल बी रॉकिंग. स्टार्ट विद 4 hours, स्टार्ट विद 3 hours एवरी डे. आगे जाके 6 घंटा मेरे को करना है. 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा वर्बल, 2 घंटा डीआई. इफ यू कैन डू दैट थिंग, ट्रस्ट मी, वी कैन रॉक. ओके, नाउ हाउ टू स्टडी. दोज आर वर्किंग एंड कॉलेज, इनके लिए टाइम टेबल सेट करना ज़्यादा ईजी है. ट्रस्ट में यार, अगर तुम ना एक टाइम टेबल सेट करो ना, योर 90% गेम इज ओवर. इफ यू सेट अप अ टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनता ही नहीं है, स्पेशली दोज हु हैव अ गैप ईयर. यार मेरा उठने का टाइम फिक्स नहीं है, तो मेरा पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनेगा? या सो प्लीज वी हैव टू सेट अप अ टाइम टेबल. आज 1 घंटा लगाओ, सेट अप वन टाइम टेबल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट माई टाइम टेबल. आई हैव टू सी माई पेरेंट्स का टाइमिंग एज वेल, लंच टाइम एज वेल, एवरीथिंग हैव टू सी. दोज हु आर वर्किंग और इन कॉलेज, इनका टाइम टेबल सेट है, एटलीस्ट इनका कुछ हद तक फिक्स रूटीन है. मुझे एक रूटीन सेट करना है. दैट इज वन थिंग विच आई वांट यू टू डू, वांट एवरीवन टू डू. हाउ इट विल वर्क, दिस इज हाउ योर टाइम टेबल लुक लाइक. वर्किंग वाला 2 से 3 घंटा रोज डालना ही डालना है. इट कैन गो अप टू 8 hours. आगे जाके वो देखेंगे, अगर कर पाए तो वेरी गुड, नहीं तो 2 घंटा तो मिनिमम चाहिए. सेम फॉर कॉलेज स्टूडेंट, 2 to 3 मिनिमम, मैक्स यू कैन गो अप टू 8 hours. या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कर सकते हैं 8 hours. ठीक है. दोनों टेकन द गैप ईयर, मिनिमम 6 hours and maximum can go up to 12 hours. कितना जा पाएगा वो बात की बात है. अभी के लिए मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ. ठीक है. स्टार्ट विद लेस, स्टार्ट विद 1 hour every day, 2 hours every day. It's like gym यार, you can't do 6 hours of gym every day. I can do 1 hour of gym every day. So start with 1 hour and then gradually will increase to 6, 7, 8 hours. Now how to study? एक दिन मैथ्स, एक दिन वर्बल, alternate like gym. एक दिन biceps, legs, एक दिन arms. Wednesday को I'm taking off, but I'm giving a mock. जिस दिन तुम मॉक दोगे उस दिन तुम पढ़ नहीं पाओगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑन द डे यू गिव मॉक. आई एम कीपिंग वेडनेसडे एज अ मॉक डे. ठीक है. तो एवरी वेडनेसडे आई एम गोइंग टू गिव अ मॉक फॉर वर्किंग स्टूडेंट एंड कॉलेज स्टूडेंट, एंड फॉर गैप ईयर वीकेंड पे आई एम गोइंग टू गिव अ मॉक. आई एम गोइंग टू स्टडी ऑल्टरनेट. जिस दिन पढ़ने को मन ना किया, रोज नहीं होता, वो अलग बात है, पर जिस दिन सपोज क्वांट करने का मन नहीं है, मैंने डीआई कर लिया. जिस दिन वर्बल पढ़ने का मन नहीं है, मैंने लॉजिक कर लिया. सो लॉजिक एंड डीआई ऑटोमेटिकली साथ में होते जा रहे हैं आपके. For college student and working student. So those taking the gap year, ideal timetable 2 घंटा maths, 2 घंटा verbal, 2 घंटा DI logic. If you can set up a timetable like this, you will be rocking. अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, this is a advanced level timetable. That's the basic timetable. एक दिन maths, एक दिन verbal. If you can do more, like I can do 3 hours every day. 2 घंटा maths, 1 घंटा DI logic. 2 घंटा verbal, 1 घंटा maths. Maths, DI logic, verbal. तो अगर आपने टाइम टेबल में देखा जाए तो मैं मैथ्स को एवरी डे डाल रहा हूँ. रोज मैं 1 घंटा मैथ्स कर रहा हूँ. स्पेशली दो जो वीक इन मैथ्स, आई नीड टू पुट एक्स्ट्रा टाइम इन मैथ्स. या so if you can make a timetable like this, it will be rocking. So I'm giving you the fundamentals how to make a timetable. Please make your timetable. आपको ये वाला फॉलो करना है, बेसिक वाला, आपको एडवांस वाला फॉलो करना है. whichever timetable you want to follow, you can do. In case you want to join us, or in case you want to join us for the shortcuts, crash course, books, mocks, you can just
call or WhatsApp any of the numbers given here. My team will be more than happy to help you out for the preparation for CAT and the CET exam. All right, all the best. Please make a timetable. That's the best thing you can do to yourself. All the best.